नारायणीयम् पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं व्रातासहायमतिसुन्दरमन्तहासं वातालयेशमनिशं हृति भावयामि. 9வது दशकं सृष्टिயை वर्णितल. स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कृतिस्वदिदितमम्बुधौ उदितमृत्यानलोकयन् तदीक्षणकुतूहलप्रतिदिशं विवृत्ताननन् चतुर्दवदनात्म अधिगसदृष्टदृष्ट्यमम्बुजां महर्निवविदूर्णितकमलमेव तत्केवलं विलोकय तदुपाश्रयं तव तनुतं तुलालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कृतस्वदितितमम्बुजौ समजनितचिन्तामगात् मुमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चय स खलु नालरङ्ग्राग्वणा स्वयोगबलविदया समवरूढवान् प्रौढदैः त्वदीयम् अतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः स कमल नालिकविविरमार्गको मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्णा एकाग्रदी समाधिबलमादते भवदनुग्रहेकाग्रही शतेन परिवत्सरैदडसमाधिबन्धोलसत् प्रबोध विशदीकृतस खलु पद्मिनी सम्भवम् अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तादृशा व्यचष्ट परितुष्टदि भुज गभोगामागाश्रयं किरीटमकुटोलसत्कटकहारकेयूरयुगं मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलतलोलसत्कौस्तुभं वपुस्तद्दयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभवं श्रीपते हरे जय जय प्रभो पद्मुभैषि दृष्टयादृशो कुरुष्वद्दियमाशुषे भुवनानि निर्वितौ कर्मटाम् इति द्रुहिणवर्णितं स्वगुणभङ्गिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयीरचन दक्षतामक्षतां गृहानं मधुनग्रहं कुरु तपश्च भूयो विदे भवत्स्व किल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे त्वदीर्यगिरमादतामुदितचेतसं वेदसम् शतकृततपास्ततः सकलु दिव्यसंवत्सरम् अवाप्यच्च तपोबलं मतिबलं च पूर्वादिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भिता पवनपातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव स प्रकल्प्य भुवनत्रयी प्रवृते प्रजनिर्मितौ तथाविध कृपावरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।